Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And this is Tuesday at 4 today. And I thought, why not talk about markets and what is happening with how do you trade options during such kind of a market scenario? And that's why I'm live right now in front of all of you. And it's a beautiful Tuesday evening at 4. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की. लेट मी जस्ट चेक इफ यू आर एबल टू हियर मी आउट क्लियरली एवरीवन एंड आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे? ओके, ऑसम. So we are now going to talk about option strategy, and I'm going to share across what is that looking on the markets and why option data is so important. So I have been talking about wave theory time cycles. You might have checked me on Friday at 4 that we do, but this one is going to be on options data. Options data में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और options इतना important instrument क्या है? अगर आप अभी के market scenario में देखेंगे and you will be able to see that the market has been going up without giving much of a dip also. Even today, if you check, it went all the way up and then later on it started showing some dip. Directly gap up ही हो रहा है. And ऐसे market scenario में you might not be able to enter the positions on future side with a good risk reward because of the gaps, because of the movement, because of the overbought nature, the risk reward is not favorable. It is very important that the risk reward is favorable if you want to trade correctly and if you want to trade properly. So since the risk reward is not favorable, options become a very, very classic instrument that you can use in order to trade the market. Now, if you're looking at an options, you might want to see the options data, which I say as volume profile. And मैं आपके साथ में chart share करूंगा, which is going to talk about what is the volume profile or the options data suggesting. It's a very interesting way to study. But options open interest profile के साथ में आपको price action भी देखना जरूरी है, which is very, very important. And अभी के market में options के through ride करना is very crucial because if I'm not going long on futures, I might be wanting to go by selling put options because of the nature of the put option. I know कि यार वो deteriorate होगा अगर निफ्टी sideways भी हो गया और यहाँ से अगर निफ्टी 100 पॉइंट भी करेक्ट हुआ, I will still be able to make money out of it. But you need to place a stop loss when you're shorting option, especially for people who are trying to generate that 2, 3, 4% return per month. I'm saying not per annum, and trying to look at options as a very important instrument. You should know it is possible to do that, and you can always rely on options. लेकिन आपको उसके लिए options के बारे में पता होना जरूरी है. That is important. Okay, there are a few comments here. Salman Misri saying, sir, your webinar are stress reliever for me. And I'm charged up for the next day if I am having a loss. Oh, fantastic, Salman. It's great to know that. And this is exclusively happening on Zoom only. So if you people, okay, so if you people miss it, then you miss it. So इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, ये वेबिनार YouTube पे नहीं कर रहे हम, Zoom पे exclusively कर ले. And options data keep changing very fast. Okay, that is correct. क्योंकि options data बहुत fast change होता है, तो हम खाली options data पे rely नहीं कर रहे, हम options data के साथ price action पे rely कर रहे. So that is crucial to understand that along with options data, you should look at also the price action. बहुत सारे लोग हैं जो खाली OI को देख के बोलते हैं अच्छा ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया. नहीं, you need to look at कि यार प्राइस क्या कर रहा है, भाव भगवान से, राइट? प्राइस इज गॉड, सो यू नीड टू लुक एट प्राइस आल्सो. बट ऑप्शंस डेटा से पता चल रहा है कि कहां पर बिग प्लेयर्स पोजीशंस बन रही है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड. एंड यहां पर मैं अभी चार्ट शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में बहुत ही क्विकली. यहां पर जस्ट अ सेकेंड, एंड ये है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल. ये ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल आपको दिखेगा गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे. आर यू एबल टू सी माय चार्ट हियर, एवरी वन ऑफ यू? दिस ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल you will be able to see on the go charting platform in 18th July
is an अमावस्या. 17th July इनफैक्ट अमावस्या थी, 18 July भी है क्योंकि वो रात को मिडनाइट में थी. So 18 July is an अमावस्या. Let's see if there is a pause here. फिलहाल पॉज नहीं है. फिलहाल Nifty has not closed below prior candle low. So as of now, nothing has changed. Are you with me? What we want to now see in the market is that what are the big players doing? Okay. So let us now look at what is the big players trying to do. And यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? Everyone. This is Nifty open interest profile, which shows big players activity. Okay, what positions are they creating? Change in OI is more important than open interest itself. ये चीज ध्यान रखना. Change in OI is more important than open interest itself. So Nifty का trend from here, how do we make out Nifty trend from here? Basis of this activity is what I want to share across everyone. So okay, so यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये है प्रोफाइल जो गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म से बनती है. I'll share the link also. You can create your go charting profile link there and you can get some offers. So my colleague will share the link. And यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ही क्विकली, लेफ्ट साइड में कॉल्स है और राइट साइड में पुट्स है. ओके एवरीवन, the left side represents the call open interest and the right side represents the put open interest. So this call open interest that we are seeing here, we can see a huge buildup on the 20,000 call side. So 20,000 का ये कॉल है जहां पे ये बहुत बड़ा बिल्डअप है. एंड यहां पर राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो पुट साइड पे जो मेजर बिल्डअप है वो है 19,500 पे. वो ऑब्वियस है, लेकिन आज के दिन में नहीं हुआ. सो देयर आर टू कलर्स दैट यू सी. वन इज द डार्क कलर and other is a fluorescent color. Fluorescent color is the change in open interest. So what we are seeing here is the change in open interest, which is much more important than the open interest itself. तो ये important एक ध्यान रखना है आपको. इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 20,000 पे बिल्डअप ऑलरेडी बहुत था और आज एडिशन हुआ है. सो दैट इज अ डिसेंट इनफ नंबर कि इसके ऊपर क्रॉस करना थर्सडे की एक्सपायरी में मुश्किल है. What is happening at the open interest of what is important is the current open interest at 19,800. ये डेटा बहुत फास्ट चेंज होता है. सो ये है 19,800 का डेटा और ये डेटा पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो बिकॉज 19,800 का डेटा विल चेंज एज एंड व्हेन द प्राइसेस कीप मूविंग. जैसे 820 आएगा पुट बढ़ने लगेगा. सो व्हाट दिस पीपल आर डूइंग इज दिस पीपल आर डूइंग एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जिन्होंने कॉल राइट कर रखा है वो अभी पुट भी राइट कर रहे हैं सो दैट हेज हो गया टू अवे. जिन्होंने कॉल राइट कर रखा है वो अभी पुट कॉल को स्क्वायर ऑफ करके पुट राइट कर रहे हैं. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स पीपल स्टार्ट डूइंग और दे स्टार्ट हेजिंग in different ways also. So what I did to explain it to you. So I was already short on the put side already. Okay, for some time to keep riding the trend. I've been shorting the puts aggressively. In order to hedge or say for example today's movement, once I saw that Nifty is pausing there and reversing on the downside, I started selling call options also because margin requirements triangle में ज़्यादा नहीं होगा. So I started selling call options also so that my ROI starts increasing sharply. So that's how you can do that even for Fin Nifty. So I had put positions on the Fin Nifty, short positions. I squared off a few short positions on the put side when I started seeing some selling pressure coming in and I started selling call options. इससे दो बेनिफिट हुआ. एक तो मेरा रिस्क जो वन साइड का था वो कम हो गया. दूसरा मैं ज्यादा लिवरेज कर पा रहा हूं बिकॉज कंबाइंड कॉल एंड पुट ऑप्शन का जो लिवरेज है वो मुझे ज्यादा मिलता है. सो आई वाज एबल टू लिवरेज मच मोर ऑन द कॉल साइड बिकॉज ऑफ दिस कंबाइंड प्रीमियम बीइंग able to squeeze out more.
Are you getting what I'm trying to tell you? So these are kind of adjustments that you should do if you know options very well. I have actually worked with National Stock Exchange earlier. I worked with National Commodity Exchange, where I worked and developed this options platform for when they were planning to incorporate options on futures for agri products. Those things I've worked on very aggressively. So I know these things very intuitively rather than going by the theoretical aspect of it. So intuitively pata hai kya ho raha hai. So if you have to ask me about an option price, I can intuitively say what can be the price at that point of time if there is 2 days to expiry. It's intuitive, right? That's how I look at options. More intuitive rather than this. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे, we can clearly see the overall tone for the options are bullish, because we have supports huge at 19,500. We have very good support which is at 19,600, which has reduced to some extent, and we have hurdle at 20,000. So expected range जो market का समझ में आ रहा है फिलहाल तो लग रहा है 19,600 से लेके 19,850 का जो रेंज है, that is how the option data is suggesting कि इसके बीच में market शायद move या expire हो सकता है. Once you have the data basis of the open interest profile, now you can form some kind of an option strategy, which can be basis of the payoff chart. So payoff chart क्या होता है? Which helps you to see कि अगर निफ्टी यहाँ से इतना जाएगा तो आपको कितना PNL होगा, क्या लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, all of those things. And as I say, for people who have a FOMO, यहाँ पर बहुत पूरे के ट्रेंड में majority of the people are having fear of missing out. Okay, so ये fear of missing out को कैसे हम contain करें? बहुत सारे जने हैं आपको. I'm asking you honestly, people who did not enter early, waiting for that trend, or waited and market just rallied sharply, so you are not able to enter. So the fear of missing out अगर आपको है, the best instrument is to sell an option. तो करना क्या है? Put options नीचे का write करते जाओ and keep writing it. I say option writing as a way in which you can take ones and twos. Option buying is a way you hit a sixer or you get out. Okay, so people are not taking ones and twos. They always want to hit a six. If you are playing a cricket match, I'm asking you, can you hit a six on every single ball? Nahin, na? Because the pitch should be right, the ball should be right, you should know how the fielding is placed. There are so many things that you should know, and you should also know one more thing: how much you have to chase. So, or how much you want to make. That's the game. What's your goal? In a nutshell, what's your goal? So, यहाँ पर भी वही चीज है that if you are not able to hit a sixer by buying an option, why not to take that ones, twos, and threes and try to squeeze out the most out of those runs, because those runs will really add up to your PNL, and the sixes will be icing on the cake, as in when you get that opportunity. But होता क्या है यार, मैं तो ऑप्शन बायर हूं और मैं ऑप्शन बाय करके ही पैसा बनाऊंगा, मैं सेलर नहीं हूं. ये माइंड में एक ब्लॉकेज होता है, क्योंकि सेलर्स हैव अनलिमिटेड लॉस एंड बायर्स हैव अ लिमिटेड लॉस. ये हमने थियरी पढ़ी हुई है और उसी के बेसिस पे हम काम करते हैं. Let me ask you one thing. If you're an option buyer, okay, and if you buy a call option which is worth your entire capital of 1 lakh, और ये call option expire हो जाता है 0 पे, can I say you lost the entire capital? अगर आपकी कैपिटल ही 1 लाख है और ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी होके एक्सपायर हो गया, कैन आई से यू लॉस्ट एवरीथिंग? सो हाउ इज बाइंग ऑप्शन रिस्क प्रूफ? नहीं, बाइंग ऑप्शन में एक होप होती है ना कि आप रुक सकते हो एक्सपायरी डे तक एंड विदाउट पेइंग अ मार्जिन. दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज यू वेटिंग टिल द एक्सपायरी डे, ऑन दैट होप यू लूज द एंटायर कैपिटल. यही सिनेरियो अगर मैं लेता हूं और मैं कहता हूं आपके पास में 1 लाख रुपए से आप ऑप्शन सेल करो. नाउ इफ यू आर शॉर्टिंग एन ऑप्शन, आपका नियरली 85-90,000 रुपीज एक लॉट सेल करने में लग गया. एक लॉट के पीछे 80,000 रुपीज, 85,000 निफ्टी का चला गया. नाउ सपोज इफ यू लूज मोर देन 10,000 रुपीज,
you will not be allowed to carry your positions because आपका अगर 90,000 का मार्जिन है, 10,000 से ज्यादा का लॉस है, तो MTM 10,000 चला गया, मार्जिन 90,000 चला गया, तो नेक्स्ट डे एक्सचेंज से कॉल आ जाएगा ब्रोकर से, यार फंड करो, नहीं तो वो वन लॉट को स्क्वायर ऑफ कर देते। तो अल्टीमेट ऑप्शन सेल करके अगर लिमिटेड कैपिटल है, हाउ मच विल यू लूज एट मोस्ट? 10,000 rupees approximately. I am telling you about the mathematics of an option. Are you with me? तो मतलब ऑप्शन सेल करके नुकसान हो सकता है 10,000 का, ऑप्शन बाय करके नुकसान हो सकता है 1,00,000 रुपए का। अभी आप मुझे बताओ, एक बाजू 1,00,000 की रिस्क है, तो रिटर्न बनेगा भी तो मे बी 10,000 15,000 का बन सकता है, लेकिन 1,00,000 की रिस्क तो है अगर आप स्टॉप लॉस के बिना काम कर रहे हो और ऑप्शन आउट ऑफ द मनी का। और अगर आप पुट ऑप्शन पे काम कर रहे हो, आप सेलिंग ऑप्शन पे काम कर रहे हो, पुट हो या कॉल हो, और अगर आपका मार्जिन ही 90,000 चला गया, 10,000 का MTM लॉस होगा, तो एक्सचेंज आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा ना पोजीशन। तो मतलब आपका 10,000 के सामने अगर आप 2,000 रुपया बना सकते हो ऑप्शन, 3,000 रुपया बना सकते हो ऑप्शन सेल करके, मैं नहीं कह रहा 10,000 आप पूरा लॉस करो, बट where do the mathematics looks much more preferred? Now I will add you one more thing. Option buyer has 70% chances of losing money, 30% chance है option buyer will make money. और अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल किया, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग मनी इज 85%। विथ प्रोबेबिलिटी, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 85% का प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन सेलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, OTM विनिंग प्रोबेबिलिटी, और बायर के लिए विनिंग प्रोबेबिलिटी 25 to 30% है। The risk in option buying is you can lose your entire capital. The risk in option selling is if you have a limited capital. अगर आपके पास बड़ी कैपिटल है और आप उसको ओपन रख दिए तो बहुत सारा लॉस हो सकता है वहां पे, there is no second thought. बट अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो वहां पर रिस्क भी लिमिटेड ही होगा, बिकॉज उसके ऊपर पोजिशंस अलाउ नहीं करेगा एक्सचेंज। सो इन अ वे, फॉर पीपल हैविंग लिमिटेड कैपिटल टेकिंग अ रिस्क, डू एंश्योर टू टेक दिस 1s 2s and 3s whenever possible, and सिक्सर तो हम मारेंगे ही ना यार जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। So this kind of trades that you are waiting for the market, waiting to market to correct and keep buying put options, tell me, I'm asking you, so many of you are here right now, how many of you have been buying put options every now and then? मार्केट गिरेगा, पुट ऑप्शन लेके रख दिया, मार्केट गिरेगा, पुट ऑप्शन लेके रख दिया। What has happened to your put option? Do you have a strategy? Do you have a method? Do you have a way to do it? That's why when you're dealing with options, which is a sophisticated instrument, you need to know how it functions. You need to know how it works. One such technique is this open interest profile. Are you with me? So look at the profile. Look what big players are doing. Why I am saying when you're looking at an open interest profile as a big player activity, if you have $1 million to deploy, will you bet on the probability of 25 to 30% or will you bet on the probability of 85%? Answer me. I want to make this interactive, guys, for every one of you. My question to you is, अगर आपके पास में $1 million है, say 1 CR, if you are risking 1 CR, will you be betting on 85% chance of you making money? Even if you make less, even if you make like 2% a month, even if you make like 25% a year, which is CAGR, अगर आप करोगे ना तो it's unbelievable compounding benefit, I'll tell you. You will bet on 85%, making that 24% a year, trying to do a CAGR out of it, 3 साल में पैसा double. That's what you will bet on when you have a big fund to deploy. You will not bet on your capital with entire these things. You will form some option strategies where the probability is still 70%, but definitely not buying a naked call option with so much of capital. You will not do that. So why don't we start thinking like a big player? अगर हमारे पास कैपिटल 1 लाख ही है, 2 लाख ही है, 5 लाख ही है, तो why not think like big players activity and
how do we go about that? So it's very important that you start thinking what they are doing. The first way of doing that is, let's see where is these players creating positions. An open interest profile helps us to know that where these players are creating their positions, and that's open interest profile will help us to understand कि market का trend क्या है. हाँ, is it clear? So होता क्या है, जहां पर अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया तो नीचे का ओटीएम ऑप्शन का पुट बेच दो, क्योंकि मार्केट ओवरहीटेड है, ओवरबॉट है, आरएसआई 75 के ऊपर है, तो यार पुट बेच के एटलीस्ट मार्केट साइडवेज हो जाएगा. स्टॉप लॉस के साथ काम करना है दोस्तों. आई एम नेवर गोइंग टू टेल यू नॉट टू प्लेस अ स्टॉप लॉस. प्लेस अ स्टॉप लॉस, स्पेशली इफ यूर ऑप्शन सेलिंग आल्सो और ऑप्शन बाइंग. एंड वंस यू नो दैट इफ this is RSI is overbought, I'm not having that conviction, but the market trend is up. Trend is your friend, right? So trade in the direction of the trend. If the trend is up, trade in the direction of the trend. Now that's the way you should approach market. That's why options become so much important. I will tell you a few things that you can do with options, since you are here, every one of you, and learning about options. What are those few things about options? Firstly, ऑप्शंस में अगर आपका व्यू स्ट्रांगली बुलिश है तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो इन द मनी. नेवर सेल एंड आउट ऑफ द मनी, नेवर बाय एंड आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन. फर्स्ट रूल, बिकॉज मैथमेटिक्स डज नॉट फेवर यू, not about anything else. The basic mathematics of option does not allow you to make money. If you are buying an out of the money option, you can still buy an at the money option, it is fine. But out of the money option or near expiry is the most common blunder traders do. Most common blunder, the reason I am saying is because you are buying out of the money option and you are buying near expiry option, the probability of you making money is 15% and less. 15, not 50, 15% and less. If you buy at the money option and far away expiry, 50-50 chances है आप पैसा बनाओगे या लॉस करोगे. Basic mathematics. If you buy in the money option, far away expiry, far away का मतलब है यार 2 वीक से ज्यादा दूर की expiry, there is a very high possibility of 60% you can still make money as per the mathematics I'm talking about. But still that 60% does not happen because the trend. So 5 factors है ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपके अगेंस्ट होते हैं. ब्लैक शोल्ड्स मॉडल अगर आपको पता होगा, नहीं तो मैं बताता हूं. पहला होता है इंटरेस्ट रेट जो कि फिक्स है, तो वो फैक्टर को जाने दो. दूसरा होता है वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी अगर आपने ऑप्शन बाय किया, वोलेटिलिटी गिर रही है जैसे कि अभी के मार्केट में, यू विल नॉट मेक मनी इवन इफ स्पॉट प्राइस बढ़ रहा है. द थर्ड इज द ट्रेंड. ट्रेंड शुड बी इन योर फेवर, मतलब डायरेक्शन, इट शुड बी मूविंग इन योर फेवर, नहीं तो आप फिर भी पैसा लॉस करोगे. द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टाइम. पीपल डू नॉट कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड दे डू ब्लंडर्स. ऑप्शन में थीटा जिसे कहते हैं, टाइम इज द मोस्ट असेंशियल एलिमेंट दैट वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड. अगर टाइम को समझ लिया आपने ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ट्रेड करने का मजा ही अलग है. So time plays a very vital role. So थीटा समझना टाइम हो गया, बहुत जरूरी है. वोलेटिलिटी समझना जरूरी है, जिसे हम वेगा कहते हैं. इंटरेस्ट रेट को जाने दो. अंडरलाइंग प्राइस जो आपका चल रहा है विच इज ट्रेंड, वो इंपॉर्टेंट है. और साथ ही में आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस एक सिलेक्ट किए, वो भी जरूरी है. तो ये बहुत सारे जो वेरिएबल्स है उसे समझ के अगर आप ट्रेड करोगे ना दोस्तों, तो पैसा ऑप्शन में बनता है. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ओवरऑल परसेप्शन दैट हाउ डू यू लुक एट दीज थिंग्स. सो मार्केट का व्यू क्या है? द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू ड्रॉ अ चैनल, जो मैंने ट्वीट भी किया. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, इंश्योर यू फॉलो मी ऑन ट्विटर. माय ट्विटर लिंक विल बी शेयर्ड अक्रॉस बाय माय कलीग, एंड you need to ensure you are following. I have shared a channel yesterday on Nifty, और प्राइसेस उसी चैनल के हर्डल पे है, ट्रेंड लाइन के हर्डल पे. सो
I am not bearish, but I am cautious. तो strategy बनती है ना, you are not bearish, but you are cautious, which means you can still do something with options, like maybe you can sell a put option. एक तो ये हो गया. If you are strongly bullish, you can buy a call option. If you are bullish but with a specific set of target, you can buy a call and sell a call, which is known as covered call या वो strategy. If you are bullish but you don't want to risk anything much, कि यार नीचे जाए तो कुछ ना जाए, ऊपर जाए तो भी पैसा बने, ऊपर बहुत सारा जाएगा तो भी पैसा ज्यादा लॉस नहीं होगा, then do a ratio spread. रेशियो स्प्रेड मतलब होता है आपने एक लॉट लिया, 4 लॉट बेच दिया आउट ऑफ द मनी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट there are so many ways in which you can deal with options. There are so many ways in which you can form these strategies. So ये सारी चीजें हैं options के बारे में, and I just wanted to talk about those things, and I think I've explained it to you. Are you guys interested in these kind of things? Every one of you. So overall view, लोग पूछ रहे कि भाई निफ्टी पे व्यू क्या है. निफ्टी पे व्यू फिलहाल तो है पॉजिटिव, लेकिन अगर निफ्टी यहां से, अभी मैं चलो व्यू की बात करते हैं, अभी बहुत देर तक ज्ञान ले लिया, समझ लिया, अभी मार्केट में करना क्या है यार वो तो बताओ. देखते हैं मार्केट में करना क्या. निफ्टी का सपोर्ट लेवल है ये, ओके, कौन सा लेवल है ये देखते हैं. निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल 19,560, मैंने मॉर्निंग में ट्वीट किया था, अगर आपने देखा हो. 19,560 अगर निफ्टी ब्रेक करता है, फॉलोड बाय दिस लेवल लो which is 19,400. क्यों? बिकॉज ये जो लेवल है ना, ये ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट किया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है वेव थियरी वालों के लिए. दिस इज 0B ट्रेंड लाइन. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई तो पहला कंफर्मेशन, दूसरी ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई तो दूसरा कंफर्मेशन मिलेगा कि ये ट्रेंड रिवर्स हो गया. एंड उसी तरीके से ये हम देखते हैं. आज मैंने एक ट्वीट भी किया था टाइम के बारे में, अराउंड 11:30 के आसपास निफ्टी का एक टाइम साइकिल है. किसी ने देखा था वो ट्वीट? 11:30 के निफ्टी के बारे में एक ट्वीट किया था. देखते हैं निफ्टी का 11:30 के आसपास क्या फॉर्मेशन हुआ. देख रहे हैं 11:30 के आसपास निफ्टी ने ये लो बनाया, और इसके बाद से जो लो बना वहां से एटलीस्ट 70 पॉइंट्स का पुल बैक मिला. ओके, चला ना साइकिल ब्रिलियंटली. सो मेरे लिए क्रूशियल लेवल कौन सा है? आज का साइकिल लो विच इज 19,680, एंड साथ ही में 19,560. तो ये दो लेवल अगर ब्रीच करता है निफ्टी, देन वी विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. अगर ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, maybe there is a possibility we will retest the recent high of 19,860. Are you with me, every one of you? And over here Salman is saying, sir, I'm your MOC student and Bollywood Bank KST. Today is the first day after 35 days I'm in loss. Okay, for the first time he lost today, and he has made profits in the last time. Hashtag time traders. Fantastic, Salman. You are doing exceptionally well. Thank you very much. So अभी निफ्टी के बारे में कल का व्यू मैं दूंगा आपको बाद में, वो मैं ट्विटर निफ्टी के बारे में व्यू तो मैंने दे दिया, एग्जैक्ट टाइम डेट मैं आपको कल सुबह दूंगा. एंड जो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल विल बी शेयर्ड अक्रॉस, सो यू कैन follow me there. Also, very important thing is that this webinar will be hosted on my app, Ashish Kyal Trading Gurukul app. So I'm going to share across my Ashish Kyal Trading Gurukul. ये वीडियो को मैं वहां पर पोस्ट करूंगा. So ensure that you go download that. उसमें मेनू में फ्री मटेरियल सेक्शन है, वहां पर जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं, और फ्री मटेरियल सेक्शन. सो डू दैट गाइस. एंड जाते जाते बहुत क्विकली, डू यू वांट टू लर्न अबाउट, डू यू वांट टू बी विथ मी फॉर अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन, learning this kind of strategies on options along with wave theory,
ऑप्शन स्ट्रेटजीज, कैसे इसे यूज करना है, सारी चीजों को देखना है, तो एक मैंने पोल लॉन्च किया है दोस्तों. ये पोल में पार्टिसिपेट करो so that you can then do that and you can register for this mentorship program also. The link will be shared across by my colleague. You can register for the mentorship program and you can do it now. So ये mentorship शुरू हो रहा है हमारा 27th of July से, where we will be 3 months together learning option trading using technical analysis. So mentorship में this part will be covered, and you can be a part of that. You can learn about wave theory. You can learn about all of those things, and so ensure you are taking care of your learnings, because if you learn, you will be able to make money. Any questions, guys? So I just shared across very quickly what I see on the market, and यहाँ पर आप बैंक निफ्टी पे देखना है आपको. ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का हम फ्राइडे करते हैं. So Friday at 4 पे करेंगे बैंक निफ्टी का. How much to invest for a college student? HEMA. If you are a, I'm not sure if you're a, HEMA is a name for men or women. Okay, if you are a college student, invest in knowledge is what I would say, rather than because you are starting very early. Learn and trade, because once you learn, you will do the right things first. If you just trade, you will do the wrong things first. So I would suggest invest in yourself, invest in knowledge, which is going to be with you for lifetime. That is more important than anything else. The link is shared across by my colleague. In case you want to be a part of this program, you can simply click on the link and register now for this program. Mr. Bibhuti is saying, sir, I started making profit only after attending your Master of Cycles. Superb teaching. Thank you, Bibhuti. Glad to know that. Yesterday time, I couldn't attend the time analysis. So guys, if you don't attend live, you miss it out, you miss it out. मेरा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर फ्री मेंबर सेक्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां पे आपको मिल जाएगा. So this mentorship is going to be interesting, where we will cover options trading, we will cover about master of waves, we'll talk about cycles theory and step-by-step approach. We have already a private Telegram group there, and we are doing a lot of those things. We will talk about more strategies about this in the options trading. MOC ka revision session is happening tomorrow, guys. So whoever is the mentee for upcoming batch also will be a part of this exclusive invite. So we are conducting Master of Cycles follow-up session, which has been pending for some time, tomorrow. So sort of thanks for reminding. I will just notify everyone else also. It will be tomorrow, and you can raise your queries, doubts during the live session we are going to have exclusively for the mentees and Master of Cycle participants. So we will do that tomorrow. Awesome, guys. This NNB there for this program. You will love what we do in mentorship. It's simply awesome. And if you register today, you will be a part of tomorrow's exclusive invite also. And that's it from my side today. And love talking about options. Thank you very much for joining in. Ashish Kyal signing off. And again, I repeat, if you are watching this on my app, if you don't have it, then download the app and watch it on my app. And see you again for the exclusive webinar tomorrow, which is for the mentees and the Master of Cycle participants. Thank you. Have a wonderful time. Do follow me on Twitter. Do check out my YouTube page, and all of those things will make concepts very clear. Thank you.